Sim is a small village, only 46 families. Most of the people do farming and grow vegetables and fruits. My village is surrounded by greenery and has lots of trees. My village is very beautiful and I love my village more than a big city. For us, the world revolves around these kids. These kids are the ones we see. These kids are the ones we feel, okay, tomorrow where are they going to be? These kids are the ones we worry about. Whatever way we can get them interested in whatever activities they want. But beyond that, we should not worry what are they going to do after 12th, what are they going to do after college. But I think it is natural for us to be so involved because of the fact that day in and out we are seeing these kids. रोटा खूलो पहाड़ में बसी जूलो कारबार पहाड़ करूलो परदेसानी जूलो धार का बंग्यालू माँ घास और निगालू की कुटिया बनूलो नून रोटा खूलो पहाड़ में बसी जूलो एक भैंस चार बकर दुबल दू की जोड़ी एक भैंस चार बकर दुबल दू की जोड़ी हिट दी पापा हड़ल है जानू परदेसाक छोड़ी सीढ़ीदार खेतवा का खेतपति करूं लो हाँ खेती में रहा हूँ ज़्यादा खेती करी खूब टक्की चा करी खेती में मजदूरी हाँ गाय बच्चा पाली बस बाकी और कुछ नहीं सिर्फ इसी में निर्भर हूँ खेती पर गुजार बकरी पाली यही है विशेष व्यवसाय तो यहाँ घर में तो कुछ नहीं है, घर में कहीं कृषि होती है और तो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं। सैलरी इतनी वो भी नहीं मिलती कि सब कुछ उसमें कर सकें। हाँ हम तो आशा से ही करते हैं कि आगे ये होगा करके। आमदनी का साधन तो ऐसा ही है, जब पहाड़ की खेती ठहरी वैसे ही ठहरा, सिंचाई जमीन ठहरी नहीं, जो ठहरी जब मैं बारिश के उस पर ही निर्भर ठहरी हम। बारिश आई तो हो गया, बारिश नहीं तो गए हम, कुछ भी नहीं होता ऐसे। हाँ मैं मजदूरी जरूर करती हूँ, काम आया मनरेगा का काम आया तो काम करने में जाती हूँ। मैं ज़्यादा बच्चों पर ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ ऐसे, और दिन में अपने काम पर भी ज़्यादा करती हूँ, कराती हूँ उनको काम भी कराती हूँ, उनका होमवर्क देखती हूँ घर आके, रोज़ चेक करती हूँ। शाम को उनकी कापी स्कूल से आए मैं उनकी कापी पहले चेक करती हूँ, कर रहे नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे नहीं कर रहे करके करती हूँ। My plan was to have a library. So if we have a library, will you come here? Will you be interested? They said, "Haan." Whether they understood or not, but I think the idea was just that they wanted to come. So on 1st of June, then we decided that okay, we'll just start
just so that the kids come here, we come to know what the kids want. So 35 children had come on that day, and they wanted to learn English songs. So, so we did some fun games with them. So that's how it started. And I think by 2 weeks, we had also realized that these children were not going to go away anywhere. They were really seriously interested in coming here. Because on the second day, the strength had gone up to 45. दो दुकानें हैं। हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। हम गांव में हंसी खुशी से रहते हैं। आए सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले हैं, एक बने जंजीर। But then also that made us realize that we have to really, I mean, if we are talking about a library, we have to get books, we have to get some racks. So, and it was not a very big budget. So then we got 2-3 racks, and we ordered our first lot of books. And we got books from, whatever we could live, but it was basically Hindi books. And reading, yes, we realized needed a lot of working on, because also they were not exposed to books so much. It's okay, they're reading books and all, but what are they reading? So it was also a lot of keenness to see what is the type of books they would pick up. And then most of them did have difficulty in reading, even simple books. So then consciously we started introducing them to books which would be interesting, but at the same time they would be able to think about, like what they're reading. It's not only about stitching, it's also about you're running an organization. It's as good as running a startup. So they look after the accounts, they do production planning, they're aware of how to buy materials, right? So they manage all the payments, whatever is their earnings that they are calculated on the number of hours they work and divided among themselves. They are coming from the 7 villages in and around sea, so that's huge. I think that just the reach has increased tremendously. There are women who are daily walking more than an hour to reach here and be part of the training program. So that, I think, is good. Most of the girls, the women, are very confident. So if you ask them on their job and responsibilities, they can confidently tell you that I handle the Len Den Khata, which is the income expense statement. Somebody handles material procurement, somebody handles communication and registering the orders. Somebody handles the machine maintenance, somebody handles quality. So I think that confidence is visible, is undoubtedly visible. The time they spend over here talking with each other, giggling and pulling each other's leg, that itself, I think, is a very good space for them to chill out, to hang out from the the tough life they live. पहले ये था, ये स्कूल से आके तो वही ठहरान का, उससे झगड़ा करना, वहाँ जाना। और अब तो इनका ध्यान यह है कि अब हमने तो लाइब्रेरी जाना है, हमने ये काम करना है, हमने वहाँ जाना है। अब इनका ध्यान ज़्यादा स्कूल की ही तरफ पढ़ाई की ओर ही है इनका।
अब एक घर से उनका मतलब नहीं है वैसे, हम ये करेंगे और घास लकड़ी से कोई मतलब नहीं है इनका, पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा है। अब तन्नू को देख रहे हैं बेटा जो कुछ होगा, क्या पता अच्छी नौकरी में लग जाए, कल परसों हमको देखे, कुछ करेंगे करे सोची क्या करेगी, जो कुछ करेंगे हम मतलब तैयार रहेंगे। यदि आपको उसकी क्या पता है, भुजा पता है, तो जब तुम इसको सॉल्यूशन करोगे, जब तुम इसका हल करोगे, तो इसमें दो चिन्हों का विषय मैं आपको बताऊंगा। दो चिन्ह कौन-कौन? Monday, Tuesday, Wednesday, we have tuitions in maths and English and science. So for 1.5 hours there's tuitions. After that there is reading of books and borrowing of books. आप बना लोगे तो आप उनको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और जो उसके एंगल हैं वो सारे कितने डिग्री के थे? 2 मिनट और कितने सेकंड आ जाएंगे? 30 ऐसे, ठीक है? ये उल्टा हो गया चेंज, मतलब 11 वाला कौन 16 क्या था तेरे पास रेडियन, इसको चेंज करके कितना आ गया 39 डिग्री। Thursday, Friday, Saturday are the fun days, that is the library and activities days. So those days we have a typical library session starts with all the kids come here. So we have first circle time where we sort of just have a little conversation, or the children share what they have experienced, something exciting they have seen or heard about. So one kid will sit in front, read out a story to all the other kids. And then depending on the story, we sort of we have some questions, we discuss about it. नहीं करता, वो बदमाशी करता, दूसरा लड़का देखते हैं कैसे मदद करता है। जोर से बोलो, हमको सुनाई नहीं दे रहा। मैं भी वही हुआ। जब थोड़ी सी मदद करता हूँ पहली तरफ अब क्या करने के लिए देती मम्मी जी ना, सादा थोड़ा कलर देती घूम जाओ सर्कल में। किसको समझ में आई कहानी? किसको समझ में आई? ओके, छोटे बच्चों को कहानी समझ में नहीं आई तो हाथ खड़ा नहीं किया, किसको समझ में आई वो हाथ खड़ा करो। We have reading in smaller groups where the older children read out to the younger ones. Some story books. I mean, they have the freedom to choose from whichever book they want to choose. And luckily now the older children have understood that if there's a young child, what type of book, what level book to pick up. With a story, there's so much. I mean, you take one story book, it covers reading, it covers word meaning, it covers writing, it covers comprehension. You can include maths in it, you can do science with it, you can do a full project including all the subjects with just a story book, and it's interesting. Like, I feel books are a very, very good medium to firstly reach a child, whether the child's heart, the child's mind, and then to be able to understand that where the child is and how to take him further, whether it is reading, writing, comprehension, and even language. हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, so the thing of the term library जा रहे has become, it's like, everybody associates with happiness. हमारी लाइब्रेरी का हैप्पी बर्थडे 1st June is when we started the library, so we generally try to have it in the first week of June, but because for the children the summer vacation begins only on 1st, so we try to do it with a gap of 3-4 days to get time to practice. आज सबको घूमने चाहिए। Also, we try to make the kids understand that when they even a dance, what they do. I mean, do they listen to the lyrics? Is it worth dancing on? It's okay to enjoy all types of music, but also what they're dancing on, do they understand the meaning of that?
So then we started telling them that let's try to do, be particular about what we are showing others, what you are being able to do, what you are learning, even the skit you put up. Let's try to just understand that what are we trying to do. अच्छा हो या बुरा, रानी साहब सब चुराते हैं और तुम कभी झूठ नहीं बोलते। मैं बिना झूठ बोले अपनी चोरी कर सकता हूँ तो मैं झूठ क्यों बोलूं? चोरी और सच्चाई क्या क्या अजीब बातें हैं। मुझे एक बात बताओ चरणदास, तुम शाही खजाने में घुस गए जो बिल्कुल भरा हुआ था धन दौलत से, पर तुमने केवल 10 सोने के सिक्के ही लिए। 10 नहीं रानी साहब, मैंने तो सिर्फ 5 ही मोहरे ली। मंत्री जी, कितनी मोहरे चोरी हुई हैं? एक चोर पे सच बोलने पर कैसा भरोसा रानी साहब? मंत्री जी, मैं जानना चाहती हूँ कि झूठा कौन है, चरणदास या मुनीम, दोनों की तलाशी ली जाए। जी रानी साहब, पहरेदार। अरे अरे कृपया मुझे क्षमा करिए रानी साहब, आने ही नहीं थे, वे यहाँ है। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चोर कहीं का। झूठा? सिपाहियों, इसे सलाखों के पीछे डाल दो। चरणदास, तुम ईमानदार तो हो पर बहुत कठोर हो। पर मैं इनके बीच का अंतर नहीं बता सकता रानी साहब। ये लो, ये अपने गुरुजी को दे देना। प्रणाम रानी माँ। Running a place like this requires a lot of support because I'm here most of the time, who takes care of the house, and the other admin part of it, that is fully his headache. I don't bother one bit about it. So that support is very important. Otherwise, one can't alone. I won't have been able to do this. And the other thing is, as a couple, if we have come here, if we both did not believe in what we are doing, if say it was only my passion to work with the children, but for him it was no, I don't want to be anywhere here, I don't think it would have worked so successfully. So Jaya takes care of the library and whatever activities etc. happen. I add my little once in a while support to it, but primarily I'm taking care of the administration part of it, organizing things, majorly looking after the computer systems that we've established here. Jaya and myself had decided that we don't want to do anything or set up anything here which would be imposed upon the people or the children. It should come from them that this is what they want. Now kids from other villages have started coming this year, particularly after this lockdown, and after possibly people came to know that there is something happening here. I'm not an educationist, so I really don't know what could be another solution. But seeing the impact that has happened here, I sincerely believe that this is the way forward. If there can be multiple such libraries in multiple villages all around the area, there'll be a major difference, and it doesn't require too much funds. It requires commitment, yes. It requires somebody like Jaya, let's say, who's committed to make a success of this place. And it doesn't require too much money. It can be done. पर आप जानती है ना, मैं किसी से झूठ नहीं बोलता। क्या? कोई बात नहीं, कंटिन्यू। पर मैंने ये वचन मजाक में लिए थे, मुझे क्या पता था ये मेरी जिंदगी में एक एक करके पेशकश होने लग जाएंगी। पेशकश। आपने तो बताया कि वो 2 ही हो जाएंगे, तो हमको आन का जरूरत नहीं है, तो आन नहीं है उसमें। फर्स्ट आन is coming after the सोने का कंगन। So this year the function, what they say is बहुत बड़ा हो रहा है, because in the 2 years during COVID
We have been lucky to have a couple who trains them in dance and theatre. So definitely the quality of what they perform is much better. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का डांस शुरू हो जाएगा. ओके ग्रेट. नाउ सब लोग जाइए एक एक माई माई वापस वो सेमी सर्कल में आ जाओ, वहीं पे आ जाओ. It's a beautiful expression of oneself. It's needless to say, how art helps in just one's life. And art also gives respects the pace of learning. They become so confident in expressing whatever they have in their heart and mind. Peer learning, a very important part in our activities. Whatever we do, it's a process, and we enjoy and give more emphasis on the process and the journey rather than the final production. चोरी करना छोड़ना होगा. मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस दुनिया में हर कोई चोरी कर कर जीवित रहता है. ईमानदारी से जियो और एक नई जिंदगी शुरू करो. It's not only the performance that they are doing, but why that character is performing the way, why he or she is doing what she is doing. So understanding those characters also, I think so it will help them to relate to the families, relate to the people. मंत्री जी जल्दी से अंदर आ जाएंगे, बोलेंगे हाँ रानी माँ आपने मुझे बुलाया, है ना. ये वाला सीन नहीं हो पा रहा है हमारा अच्छे से, ठीक है. I have never seen kids this committed anywhere. I have worked with like international schools, I have worked with NGOs, I have worked with like so many different groups, educational institutes. I have never seen kids coming before time and so committed, like not a single drop. अगर आपका पहला एक्ट है गिद्दा, आप गिद्दे की एक्ट में वो कॉस्ट्यूम में आएंगे. आपका जो भी पहला एक्ट है आप उस वाले कॉस्ट्यूम में यहाँ पर कितने बजे आएंगे? 9 बजे. 9:10 पे नहीं आना है. कितने बजे आना है? 9. 8:40 पे नहीं आना है. कितने बजे आना है? 9. 9 बजने से 5 मिनट पहले आओगे तो चलेगा. 9 बजने के 5 मिनट तक बाद में आओगे तो नहीं चलेगा. ठीक है, समझ में आ गया सबको? 8:40 को, 9:05 को. भैया हमारे बच्चे पढ़े तो हम उसमें खुश हैं. काम तो हमारा रोज ही काम था. हमारी तो जिंदगी आधी से ऊपर को चली गई. अब 50 साल से ऊपर हो गए. अब हमने काम ही तो किया बचपन से. अब भी करेंगे, जब तक रहेंगे तब तक काम ही करेंगे. अब इनका ये पढ़ लिख जाएंगे, इनका भविष्य सुधर जाएगा तो हमको भी खुशी होगी. हमको तो बहुत ही फायदा हुआ. वैसे सबसे पहले तो हमारे बच्चों का भविष्य सुधरा. हमको पहली खुशी तो ये है. उनकी वजह से ही मतलब हम हमारे बच्चे आगे को जा रहे, हर चीज़ में आगे को जा रहे हो. पढ़ाई में भी कंप्यूटर सीख रहे, सिलाई सीख रहे.
ऐसे करते गए हमारे आपके वो जो आपकी ड्रेस है उसके साथ रख दो प्रॉप्स और ये सब। ताला को रेडी कर कोई नहीं जानता। हाँ, की तलाश रहती है। अच्छा ठीक है, तुमने अपने क्या नाम चलेगा आता गुरुजी? और क्या करते हो? मैं चोर हूँ, मैं चोरी करता हूँ। आज यहाँ कैसे आए हो? मैं भगवान से थोड़ी और दौलत मांगने आया हूँ। आज रात यहीं रहो, तरो ताजा हो, भोजन करो, अब कल सुबह प्रसाद लेके चले जाना। मुझे मत रोको, आपका नुकसान हो जाएगा। अब सो जाओ। ये क्या? यहाँ तो मेरा सब कुछ ले गया, मेरे भगवान को मुझसे भी ले गया। अब मैं क्या करूँगा? गाँव वालों पकड़ो इसको, यह चोर है, चोर।